Hello students, Ncert Solutions, Class 12 Physics, Chapter number 2, Electrostatic Potential and Capacitance. Question number 21. According to this question, there are two charges minus q and plus q located at point 0, 0 minus a and 0, 0 a respectively. A part, what is the electrostatic potential at the point 0, 0 z and x, y, 0? क्वेश्चन में गिवन है हमें माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस एट पॉइंट 0, 0 माइनस ए एंड 0, 0 ए। तो सबसे पहले हम ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कंसीडर करते हैं। हियर सपोज दिस इज जेड एक्सिस, हियर दिस वाई एक्सिस एंड हियर दिस एक्स एक्सिस origin and a point 0, 0 minus a, that is on negative z axis point. This point is suppose a and the coordinate of this point 0, 0 minus a and minus q charge is placed at this point a, and second point is b, this point b, and the coordinates are 0, 0 plus a, and a plus q charge is placed at point B. Now what is the electrostatic potential at the point 0, 0 z? Suppose here this point is C and the coordinate of this point are 0, 0 z, 0, 0 z. इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ड्यू टू दीज टू चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के कारण सी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हेयर यू नो दिस डिस्टेंस इज जेड, फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज जेड, फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट सी, एंड फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट बी दिस इज डिस्टेंस ए। देयरफॉर दिस डिस्टेंस from B to C, this is equal to Z minus A, and similarly here this distance is A from A to O, right? Now हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C, तो दिस इज V is equal to total electric potential, V is equal to potential due to this minus q charge plus potential due to this plus q charge, right? तो पहले हम पोटेंशियल लिखते हैं ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर। आप जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन डिस्टेंस, तो दिस इज V is equal to के क्यू अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस इज हाउ मच? Distance is z minus a. From here to here, this is z minus a. Similarly, potential due to this negative charge, this is k minus q upon distance is from here to here. This is z plus a. Z plus a, right? दोनों चार्जेस के कारण पोटेंशियल हमने सी पॉइंट पर कैलकुलेट किया। नाउ दिस v is equal to k q is common, take outside. And this is here LCM is z square minus a square. Now this is z plus a and minus this is minus z plus a, and on solving this z cancel by this, therefore V is equal to this is k into twice, this is twice QA upon this is equal to Z square minus A square. This is the electric potential at point C. इन दोनों चार्जेस के कारण C पॉइंट पर पोटेंशियल। नाउ पोटेंशियल चाहिए हमें पॉइंट, कहाँ पर पोटेंशियल चाहिए? x, y, 0 पर चाहिए पोटेंशियल, एंड लेट पॉइंट x, y is this D point and the coordinate x, y, 0, right? Potential at point D
is 0 because charges minus q and plus q are at equal distance from these point charges. This point, right? This point D कहाँ पर लाई करता है? XY प्लेन में लाई करता है और XY प्लेन की सभी पॉइंट की डिस्टेंस इस Z एक्सिस से पॉइंट A और पॉइंट B से इस पॉइंट D की जो डिस्टेंस है वो सेम होगी. Therefore potential due to this minus q charge is negative and the potential due to this positive charge here is positive. Both are equal in magnitude but with opposite sign. Therefore क्या होगा? Total electric potential at point D is 0. Right? Now B part, obtain the dependence of potential on the distance r of the point from the origin when r upon a is very very greater than a. B part, we know that at any point electric potential due to electric dipole V is equal to this K into P cos theta upon this R square minus A square cos square theta. इसका डेरिवेशन हमने थ्योरी पार्ट में किया था तो वहाँ से डायरेक्ट यूज कर रहे हैं. V is equal to K P cos theta upon R square minus A square cos square theta. And when given R upon A is very very greater than 1, that is this A is very very less than R, hence नेगलेक्ट कर सकते हैं, हम A को नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नेगलेक्ट, and hence V is equal to this K into P cos theta, this P cos theta upon this R square. तो V is equal to KP cos theta upon R square. Hence हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिपेंडेंसी है R पर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. V is inversely proportional to square of distance. Right? Now C part, how much work is done in moving a small test charge from point 500 to the point -700 along the x-axis? Does the answer change if the path of the test charge between the same points? C part में कहता है हमारे पास ये दो चार्जेस थे. Here at point A this minus q charge and here this point B plus q charge, and this line represent suppose x-axis and this is here z-axis, and a point P is here at x-axis point P and the coordinates are 5 0 0, and another point this point is Q and the coordinates are this is -7 0 0. Right? क्वेश्चन में कहता है वर्क डन कैलकुलेट करें इन मूविंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट 500 टू पॉइंट -700. हमें यहाँ से यहाँ पर मूव कराने में कितना वर्क, किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ता है ये कैलकुलेट करना है. राइट? Here it is clear that electric potential at point P and
Q are 0. Now work done is equal to, charge into potential difference. Now this is charge into potential difference is 0. पॉइंट P और पॉइंट Q पर, पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं हम. ड्यू टू दिस चार्ज, माइनस का चार्ज है तो इसलिए पोटेंशियल नेगेटिव. ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल इज पॉजिटिव. बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P is 0. Similarly, total electric potential at point Q is 0. Therefore, potential difference is 0. Therefore, work done in moving a test charge from point P to Q is 0. Right? This total work done. Now question में कहता है, यदि हम टेस्ट चार्ज को इस लाइन से अलग किसी दूसरे पाथ के अलोंग मूव कराते हैं, इस लाइन से अलग किसी टेस्ट चार्ज को ऐसे मूव कराते हैं फ्रॉम पॉइंट P टू Q, या फिर इस तरह से मूव कराते हैं, तो वर्क डन किस तरह से चेंज होगा ये हमें बताना है. एज वी नो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is conservative, that is work done does not depend on path followed. ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है, और आप जानते हैं कंजर्वेटिव फील्ड के द्वारा या कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता. Hence, no change in answer on changing the path of the test charge. यदि हम टेस्ट चार्ज के पाथ को चेंज करें तो वर्क डन हमारा चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, एंड फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड द वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए. थैंक यू.